The session is being recorded, and in today's class, we are following book. Ielts 14. Okay. Tests 1 to 4. Published by Cambridge University Press and Uckles 2019. This recording is copyright. Test 1. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. अब तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। मैंने कहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मे हैव ऑलरेडी डन पार्ट 1 जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन जिनका आज पहला दिन है वादे के मुताबिक मैंने बुक 14 आज करवानी है। रीडिंग में भी मेरी बुक 14 चलेगी इस वीक, आइल्स जनरल रीडिंग के अंदर भी और आइल्स एकेडमिक रीडिंग में भी। आपसे इस सवाल में देखें सबसे पहले क्या पूछी जा रही है, नेशनैलिटी। अमूमन इसमें आपसे इस तरह के सवाल होते हैं, आपका देखिए नेशनैलिटी पूछी जा रही है, नेम पूछा जा सकता है, डेट ऑफ बर्थ पूछी जा सकती है, ऑक्यूपेशन पूछा जा सकता है, रीजंस आते हैं मुख्तलिफ, आप क्यों आ रहे हैं, जैसे आप पूछा है रीजन फॉर विजिट। मैंने हमेशा आपको एक बात गाइड की है कि यहाँ पर जो बाय लिखा हुआ है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ बाय की जगह पर दूसरा वर्ड क्या आता है और एंटीक को क्या कहते हैं। एंटीक को पुराने अल्फाजों में क्या कहते हैं, एंटीक। एंटीक को आप लोग पुराने जबान में, पुराना मैंने बोल ही दिया, यूनिक भी कह सकते हैं। बाय इज इक्वल टू परचेज, एंटीक इज इक्वल टू, एंटीक इज इक्वल टू, कभी भी डैश से पहले वाला जो वर्ड है वो एज इट इज नहीं बोला जाएगा। एंड वेरी गुड कीजिए, वेरी गुड अस्मा, दो स्टूडेंट्स ने मुझे सही जवाब दिया। एंटीक का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है ना। एंटीक जो होती है वो पुरानी चीज होती है। फिर उसके बाद देखिए आपको एड्रेस बता रहे, आपको एड्रेस एड्रेस सब बताना है। यहाँ पर लिखा हुआ है डैश अपार्टमेंट, फिर यहाँ पर आपको एक अमाउंट बताना है। डिटेल्स ऑफ थेफ्ट, कितने पैसे थे, अ वॉलेट कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली, क्या कितने पैसे थे उसमें और क्या था। अब आप सोचे वॉलेट के अंदर एक उसके खातून का जो वॉलेट था उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, लिपस्टिक, और क्या था उस डेट ऑफ थेफ्ट। यहाँ पर अब आपको डेट बता दी है, देखिए डेट ऑफ थेफ्ट। बहुत आसान चीजें आपसे पूछी जाती है पार्ट 1 में। अब देखिए यहाँ से आपको लोकेशन पूछी जा रही है, आउटसाइड द डैश। अब ये आउटसाइड तक कहाँ, किसके, फैक्ट्री के आउटसाइड थी, वो बिल्डिंग कौन सी थी जिसके ये बाहर थी, आउटसाइड द डैश। उसके बाद देखिए आपसे कहते हैं सम बॉयज आस्क फॉर, वो बॉयज क्या पूछ रहे थे, आस्क फॉर। और उसके बाद डिटेल्स ऑफ द सस्पेक्ट, आपको जिस पर शक है वो क्या पूछ रहे थे, ही वॉज अबाउट 12। देखिए ये उसने क्या बताइए, उसकी एज बताइए। स्लिम बिल्ड विद डैश हेयर, और उसके कर्ली हेयर, ये बुक 14 है। और उसके जो बाल थे वो कैसे थे, कर्ली थे, स्ट्रेट हेयर, क्या थे, किस तरह के बाल थे। अब बाल बहुत सारी तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट हेयर थे, लॉन्ग हेयर थे, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपसे क्राइम रेफरेंस नंबर एलोकेटेड। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को शुरू में बिल्कुल जो पहली क्लास में लिसनिंग का स्टार्टर लेता हूँ उसके अंदर मैंने तमाम स्टूडेंट्स को एक लिस्ट लिखवाई थी। मेरा कल का एक सेशन हुआ था, मैंने लिसनिंग के ऊपर बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लिखवाई भी है। मैंने 3 साल के अंदर बहुत सारे सेशन लिए, लेकिन कभी टिप्स एंड ट्रिक्स लिखवाता नहीं हूँ। लेकिन कल का जो सेशन था उसको लाजमी देखिएगा, उसमें मैंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लिखवाई है लिसनिंग के हवाले से। मैं आपको क्लास के बाद फॉरवर्ड कर दूंगा, तो उसको जरूर देखिएगा। तो मैंने उसमें यही लिखवाया था कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। आप नाम हो सकता है, नेशनैलिटी हो सकती है, आपका ऑक्यूपेशन हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, डेट हो सकती है, अमाउंट हो सकती है, स्पीड हो सकता है, साइज हो सकता है, कलर हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई बिल्डिंग का नाम हो सकता है, कोई लोकेशन हो सकती है, ठीक है। चले अब आप लोग तमाम स्टूडेंट बहुत गौर से सुनिएगा, आपके पास पेपर और पेंसिल लाजमी होनी चाहिए। मैं बीच में अब कहीं इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। और इसके बाद जो एक दूसरा मिनी बॉक लूंगा उसमें कोई गाइडलाइन नहीं दूंगा, ठीक है, कोई गाइडलाइन नहीं दूंगा। और भी स्टूडेंट है आंसू, उनको भी हमें देखना होता है। तो चलिए, हियर वी गो।
There will be time for you to read the instructions and questions. अच्छा, अब एक बात और बता दूं। अब देखिए यहाँ पर लिखी हुई है एक एग्जाम्पल। 2019 और 2020 तक ऐसा आता था, लेकिन जब आप बुक 17 उठाएंगे, बुक 17 के अंदर अब आपको एग्जाम्पल नजर नहीं आएगी। वो कहता है देयर इज एन एग्जाम्पल व्हिच हैज बीन डन फॉर यू। अब ऐसा नहीं होता है, अब आप डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। On this occasion only, the conversation time. Listen carefully and answer questions 1 to 3. Good morning. What can I do for you? I want to report a theft. I had some things stolen out of my bag yesterday. I'm sorry to hear that. Right, so I'll need to take a few details. Can I start with your name? Louise Taylor. Okay, thank you. And are you resident in the UK? No, I'm actually Canadian, though my mother was British. अब आपने इसकी नेशनैलिटी लिख ली। एक्चुअली आई एम डैश, एक्चुअली आई एम डैश। अपने पास पेपर पे लिखते रहिएगा, आखिर में अपना स्कोर चेक कीजिए। ठीक है। माय मदर इज ब्रिटिश। सदम गौर से सुनिएगा। Bag yesterday. I'm sorry to hear that. Right, so I'll need to take a few details. Can I start with your name? Louise Taylor. Okay, thank you. And are you resident in the UK? No, I'm actually Canadian, though my mother was British. And your date of birth? December 14th, 1977. So you're just visiting this country? That's right. I come over most summers on business. I'm an interior designer, and I come over to buy old furniture, antiques, you know? There are some really lovely things around here, but you need to get out to the small towns. I had a really good trip this year until this happened. Okay. So you've been here quite a while? Yes, I'm here for 2 months. I go back next week. So may I ask where you're staying now? Well, at present, I've got a place at Park Apartments. That's on King Street. I was staying at the Riverside Apartments on the same street, but the apartment there was only available for 6 weeks, so I had to find another one. Okay. And the apartment number? 15. Right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Now listen and answer questions 4 to 10. Now, I need to take some details of the theft. So you said you had some things stolen out of your bag? That's right. And were you actually carrying the bag when the theft took place? Yes, I really can't understand it. I had my backpack on, and I went into a supermarket to buy a few things, and when I opened it up, my wallet wasn't there. And what did your wallet have in it? Well, fortunately, I don't keep my credit cards in that wallet. I keep them with my passport in an inside compartment in my backpack, but there was quite a bit of cash there, about 250 pounds sterling, I should think. I withdrew 300 pounds from my account yesterday, but I did a bit of shopping, so I must have already spent about 50 pounds of that. Okay. At first I thought, oh, I must have left the wallet back in the apartment. But then I realized my phone had gone as well. It was only a week old, and that's when I realized I'd been robbed. Anyway, at least they didn't take the keys to my rental car. Yes. So you say the theft occurred yesterday? Yes. So that was September the 10th?
And do you have any idea at all of where or when the things might possibly have been stolen? Well, at first I couldn't believe it because the bag had been on my back ever since I left the apartment after lunch. It's just a small backpack, but I generally use it when I'm traveling because it seems safer than a handbag. Anyway, I met up with a friend and we spent a couple of hours in the museum. But I do remember that as we were leaving there at about 4 o'clock, a group of young boys ran up to us and they were really crowding round us and they were asking us what time it was. Then all of a sudden, they ran off. Can you remember anything about them? The one who did most of the talking was wearing a t-shirt with a picture of something. Let's see. A tiger. Right. Any idea of how old he might have been? Around 12 years old? And can you remember anything else about his appearance? Not much. He was quite thin. Color of hair? I do remember that. He was blonde. All the others were dark-haired. And any details of the others? Not really. They came and went so quickly. Right. So what I'm going to do now is give you a crime reference number so you can contact your insurance company. So this is 10 digits, 87954-82361. Thank you. So, should I contact? अच्छा देखिए, जो मैं हमेशा आपको एक बात गाइड करता हूँ, जो मेरे लिसनिंग के सेशंस होते हैं ना, और आप कोई सभी ऑनलाइन सेशन कहीं पे भी अटेंड कर ले पूरे पाकिस्तान में, आपको वो एचडी क्वालिटी भी मिलेगी जूम के सेशंस के अंदर, जो आपको हेडफोन लगा के घर पे मिलेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में मिलेंगे। लिसनिंग के सेशंस आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके अंदर जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स सेशन से पहले बताता हूँ कि देखिए इन बातों को जहन में रखें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको सुनाई दी जानी चाहिए सही। और अगर आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, बार बार आपको आवाज ब्रेक होकर मिल रही है, तो आपके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म कौन सा है प्रैक्टिस का? घर। कि जब आप टिप्स एंड ट्रिक्स सुन ली, आप प्रैक्टिस उसी इन्हीं सेशन को दोबारा आप प्रैक्टिस करें। आपके पास मोबाइल फोन के ऊपर आ जाएगी, आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है? अच्छा, अब आंसर्स टैली कीजिएगा पहले तो। टेन आउट ऑफ 10 कितने लोगों के आए? आपका नेटवर्क इशू होता है ना, तो आपको आवाज कट कट कर आएगी, और जिनके नेटवर्क इश्यूज नहीं होते उनको आवाज सही आती है। पहला है कैनेडियन। कैनेडियन की स्पेलिंग में आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, 0। फर्नीचर की स्पेलिंग चेक कीजिए, आपको उसके बाद लिखना था पार्क, फिर 250 250 फोन, उसके बाद 10 सितंबर म्यूजियम, टाइम ब्लॉन्ट 8795482361। एक नंबर भी इधर उधर कर दिया, 0। स्कोर बताइए, 10 आउट ऑफ 10 कितने लोगों के आए? कीजिए 10, मारिया 10, नूर फातिमा 9। बेटा आपका नेटवर्क इशू आ रहा है ना, तो 9, जमशेद 5। जमशेद मुझे व्हाट्सएप दोबारा कर दीजिएगा, मैंने शायद आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया, आई थिंक आपका नंबर मुझसे मिस हो गया था। असरा 10, असमत 8, अनम 8, 9, 10 10 10, 5, निदा 5, फर्स्ट टाइम सर इट्स 10। आपका सेकंड वीक है ना, कि सेकंड वीक में आकर 10 हो जाते। मैं आपको इस बात की, देखिए हमेशा ये बात कहता हूँ कि पार्ट 1 में 3 दिन आप लगा दें। जो नए स्टूडेंट होते हैं हमेशा कहता हूँ ना, 3 दिन आप स्पेंड कर दें, पार्ट 1 में आप 10 आउट ऑफ 10 पर आ जाएंगे अगले हफ्ते में। 1, ठीक है? तो तमाम स्टूडेंट्स, अगर पार्ट 1 में अभी भी आपके 10 आउट ऑफ 10 नहीं आ रहे और 4 हफ्ते आप गुजार चुके, तो बेटा फिर देखें आप कहीं गलती कर रहे हैं, आप डेली बेसिस पर लिसनिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ठीक है ना? आप डेली बेसिस के ऊपर लिसनिंग की प्रैक्टिस करें। अब मैंने हमेशा आपको मैं नुस्खा दे देता हूँ, 30 मिनट्स। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं आप लोगों को
15 से 30 का एक मैं प्लान बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्री होंगे। मैं 15 अप्रैल से और 30 अप्रैल का एक सेल्फ स्टडी प्लान डिजाइन कर रहा हूँ, और मैं आपसे फुल व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट में रहूंगा। 15 दिन में आप किस तरह से अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी के तौर पे कर सकते हैं, आई एम गोना गाइड यू। तो वो एक बड़ा जबरदस्त प्लान मैं इंशाल्लाह तश्कील दे रहा हूँ कि 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किस तरह से हम खुद से पढ़ें। गूगल क्लासरूम की एक्सेस आप लोगों के पास मौजूद है, और आप लोग डे टू डे आप तैयारी करते रहेंगे, और 15 दिन में पूरी तैयारी करवाऊंगा मैं, राइटिंग भी उसमें शामिल है, ठीक है ना। और स्पीकिंग के लिए 1-to-1 सेशन हम आपका रख देंगे, अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग अवेलेबल होंगे तो 1-to-1 सेशन में अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई किस वक्त आप लोग 1-to-1 स्पीकिंग का सेशन ले सकते हैं। स्पीकिंग के लिए आपको हमेशा मेरी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आई विल इंटरेक्ट यू, ठीक है ना। चले, ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इंटरेक्टिव सेशन नहीं हो पाएगा, उसके अलावा चौथे दिन से लेकर आपका 1-to-1 सेशन आप अटेंड कर सकते हैं। अपनी स्पीकिंग को जो ना वो कंटिन्यू रखिएगा। चले आगे चलिए। अब इस सेशन में मैं बिल्कुल भी गाइडलाइन नहीं दे रहा हूं, बस टेस्ट सामने आएगा और आप शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट। कभी कभार ये रिकॉर्डिंग में आ जाती है। Is in 4 sections. First, you have health clinic, so I understand this is your first visit to the clinic. Yes, अच्छा, ये एक सबसे 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 खतरनाक लिसनिंग टेस्ट आया था ये। आप देखिएगा ये कितना तेज जाएगा। ये मुझे आज इत्तेफाक से दोबारा आ गया आप लोगों के सामने। देखिए, मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप लोग देखिएगा। उसने कॉन्टेक्ट नंबर पूछना है, डेट ऑफ बर्थ पूछनी है, ऑक्यूपेशन पूछना है, इंश्योरेंस कंपनी का नाम पूछेगा, फिर वो पूछेगा टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या थी, कब शुरू हुई, और उसके बाद कोई आपने पहले स्पोर्ट्स खेली है, कोई स्पोर्ट्स बताइए, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ठीक है। ये इस बहुत स्पेशल है, इसका आप चाहे तो नोट कर लें कि बुक 14 टेस्ट 2 सेक्शन 1 है। ये बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर आया था स्टूडेंट्स के पास। ये देखें। Okay, well, you will see that there is an example that has been done for you, Ms. Julie Ann Garcia. that's correct. The woman's name is Julie Ann Garcia, so Garcia has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Hi, come and take a seat. Thank you. My name's Carl Rogers and I'm one of the doctors here at the Total Health Clinic. So I understand this is your first visit to the clinic. Yes, it is. Okay, well I hope you'll be very happy with the service you receive here. So if it's all right with you, I'll take a few details to help me give you the best possible service. Sure. So can I check first of all that we have the correct personal details for you? So your full name is Julie Ann Garcia. That's correct. Perfect. And can I have a contact phone number? It's 219-442-9785. Okay, and then can I just check that we have the correct date of birth? October 10th, 1992. Oh, I actually have 1991. I'll just correct that now. Right, so that's all good. Now I just need a few more personal details. Do you have an occupation, either full-time or part-time? Yes, I work full-time in Esterhazy's, you know, the restaurant chain. I started off as a waitress there a few years ago, and I'm a manager now. Oh, I know them. Yeah, they're down on 114th Street, aren't they? That's right. Yeah, I've been there a few times. I just love their salads. That's good to hear. Right, so one more thing I need to know before we talk about why you're here, Julie, and that's the name of your insurance company. It's Cawley Life Insurance. That's Cawley. Excellent. Thank you so much. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10.
Now listen and answer questions 5 to 10. Now, Julie, let's look at how we can help you. So tell me a little about what brought you here today. Well, I've been getting a pain in my knee, the left one. Not very serious at first, but it's gotten worse. So I thought I ought to see someone about it. That's certainly the right decision. So how long have you been aware of this pain? Is it just a few days, or is it longer than that? Longer. It's been worse for the last couple of days, but it's 3 weeks since I first noticed it. It came on quite gradually, though, so I kind of ignored it at first. And have you taken any medication yourself or treated it in any way? Yeah, I've been taking medication to deal with the pain, Tylenol, and that works okay for a few hours, but I don't like to keep taking it. Okay. And what about heat treatment? Have you tried applying heat at all? No, but I have been using ice on it for the last few days. And does that seem to help the pain at all? A little, yes. Good. Now, you look as if you're quite fit normally. I am, yes. So do you do any sport on a regular basis? Yes, I play a lot of tennis. I belong to a club, so I go there a lot. I'm quite competitive, so I enjoy that side of it as well as the exercise, but I haven't gone since this started. Sure. And do you do any other types of exercise? Yeah, I sometimes do a little swimming, but usually just when I'm on vacation. But normally I go running a few times a week, maybe 3 or 4 times. So your legs are getting quite a pounding, but you haven't had any problems up to now? No, not with my legs. I did have an accident last year when I slipped and hurt my shoulder, but that's better now. Excellent. And do you have any allergies? No, none that I'm aware of. And do you take any medication on a regular basis? Well, I take vitamins, but that's all. I'm generally very healthy. Okay. Well, let's have a closer look and see what might be causing this problem. If you can just get up. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Yes, please check your answers. 10 out of 10. अगर वॉइस क्वालिटी आपको डिस्टर्ब कर रही है तो बेटा आपको अभी सेशन के बाद लिंक्स फॉरवर्ड हो जाएंगे, वैसे भी ऑलरेडी आपके पास है। बुक 1 टू बुक 17 आपके पास पार्ट 1 के आ जाएंगे। 10 में 10 पुरानी आवाम सब 10 पर आ चुकी है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। कल पब्लिक क्वालिटी पब्लिक डिमांड पर मैप्स का सेशन दूंगा और परसों मैं नोट टेकिंग, मतलब कल और परसों मैं टाइप 2 पार्ट 2 जो आता है उसके दोनों वैरायटीज के ऊपर डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। मैप के ऊपर भी कल मैप के ऊपर करूंगा और परसों जो है वो इंशाल्लाह नोट टेकिंग के ऊपर करूंगा। दोनों दिन पार्ट 2 का सेशन होगा। मिस सबा का सेशन शुरू हो गया, अपना व्हाट्सएप चेक कर लीजिए और अपना रेलेवेंट सेशन ज्वाइन कर लीजिए बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन।